ओडिशा गणमाध्यम रे प्रथम उद्घाटन उत्सव को प्रथम थर पर संचालन करिछि एआई एंकर किरण। कलिंग टीवी द्वारा आयोजित सम्मेलनी विकसित भारत और विकसित ओडिशा कार्यक्रम रे एभली दृश्य देखा मिली। कलिंग टीवी सम्मेलनी विषय रे अवगत कराइबा सह सम्मेलनी रे जोग देथिबा समस्त अतिथि परिचय प्रदान करिछि एआई एंकर। यहाकू केरल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर मध्य प्रशंसा करथिले। कार्यक्रम प्रथम अधिवेशन रे मुख्य अतिथि भाव में जोग दे केरल राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, वरिष्ठ सांबादिक तथा न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप संपादकीय निर्देशक प्रभु चावला एवं कनाडा प्रभा बेंगालुरु मुख्य संपादक रवि हेगड़े जोग देथिले। ए अवसर में किट किस तथा कलिंग टीवी प्रतिष्ठाता प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत सामंत कार्यक्रम में अतिथि परिचय प्रदान करथिले। विकसित भारत एवं विकसित ओडिशा कार्यक्रम द्वितीय अधिवेशन में जोग देथिले राजस्व एवं विपर्यय परिचालना विभाग मंत्री सुरेश पुजारी, शिल्प मंत्री संपत चंद्र स्वाई, कांग्रेस विधायक दल नेता रामचंद्र काडाम, बीजेडी वरिष्ठ उपसभापति देवी प्रसाद मिश्र, तेज डीजीवाई प्राइवेट लिमिटेड कार्यनिर्वाही निर्देशक बिनराम माले एवं कलिंग टीवी निर्देशक उमापद बोस एवं मुख्य संपादक सौम्यजित पट्टनायक। सेपरी तृतीय अधिवेशन में वरिष्ठ सांबादिक तथा द टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली एवं बेंगालुरु पूर्वतन सह संपादक राहुल नंदन, बेंगालुरु टाइम्स ऑफ इंडिया पूर्वतन मेट्रो संपादक सीतालक्ष्मी एस, राज्यसभा सांसद निरंजन बिसी एवं सांसद रविंद्र नारायण बेहरा जोग देथिले। And I'm delighted to welcome you all to the Kalinga TV conclave themed Vikasit Bharat, Vikasit Odisha. I have specially come for this Kids and Kiss and Kalinga TV for this very function. I had heard many things about this and I just wanted to know what it is. Today I visited the campus of Kids and Kiss, just had a small tour and tried to understood. For me, the road to Vikasit Bharat passes through Vikasit Odisha. विकसित ओडिशा जब होगा तब ही जाकर हमारा विकसित भारत होगा. सो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इट. एवरी स्टेट हैज टू से कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इट. सी, विकसित भारत का मतलब यह है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूं. एंड व्हाट कैन बी दैट? कैन आई माई सेल्फ एडॉप्ट अ सेंस ऑफ स्वदेशी? Can I do it? If Bharat has grown, so has New Indian Express, so has Odisha, and so has Mr. Chancellor, the founder Chancellor of this. He has also created something which we are all proud of. KIT and KISS are the examples of, as he said, Viksit Odisha. I am thinking of Dr. Samanta here. He is single, I am told, but he has fathered many institutions. The institutions वो अकेले हैं, कुंवारे हैं, परंतु काफ़ी इंस्टीट्यूशन के पिता भी हैं. इतनी अच्छी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोई भी जनरेट नहीं कर सकता. KISS and KIDS are examples of outstanding academic institutions without profit, running on self-financing basis, creating a financial model which makes the institution highly acceptable not only in India but abroad. It is because of that he has won so many PhDs, the highest ever by any education in India. I am told he has got 100 PhDs from all over the world. We must give a big hand to him as well. One side achieving the growth and one side achieving the reach of the last person in the society. You think, is it possible? That's a living example. In fact, Dr. Achyut Samanta ji himself is one of the finest examples of both Viksit Bharat and Viksit Odisha. His visionary leadership created KIIT and KISS, two institutions that reflect the true spirit of inclusive development. KIT serves those who can afford the quality education. KIT serves those who cannot.
It is truly extraordinary that 40,000 students or children from KG to PG receive free education, accommodation, food, clothing, healthcare, sports training, and skill development as KISS. A child enters as a young learner and leaves as an empowered leader, ready for the life. No wonder UNESCO has recognized KISS as one of the world's best models of self sustained growth. He has also created one of India's finest sports complexes and transformed the campus into a vibrant education hub. This exactly I was telling. The Vikasit means one side achieving the growth, another side reaching it to the poormost person. With KIT, it has achieved the growth, and KISS, it has reached the poorest people. This is the Vikasit example. I wholeheartedly congratulate Sri Samantaji for his unparalleled contribution to Odisha and to India.